Good morning, dear students. Today I am going to teach a science class for standard 3 students, chapter 9 air. Dear students, you know air is a very essential things for us. Without air, human beings and plants do not survive. So dear students, let's come and discussion about more about air. Chapter 9 air. In this chapter we are going to discussion about air, fresh air, sources of fresh air, uses of air, air pollution, natural causes and man-made causes, measures to prevent air pollution. First we know about what do you mean by air. Air is all around us. It is called Earth's atmosphere. जो हम लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर कहते हैं उसी को हम लोग एयर कहते हैं. We cannot see or smell it, but we feel it because air has no color, no smell, so we cannot see it or smell it, but we feel it. When air moves, it's called wind. That means moving air is called wind. Gently wind is called breeze. It creates a pleasant and soothing feelings. That means when air blows, it creates a pleasant and soothing feelings. On the other hand, strong winds creates a stormy weather like फाइलिन या फिर जितने सारे स्टॉर्मी होते हैं जितने सारे होते हैं जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है तो वो उसी टाइम होता है. नेक्स्ट फ्रेश एयर. वी नो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, इथेन, फ्लोरीन एटसेट्रा. But it also contains other things like water vapor, dust, germs and smoke. Air which is free of dust, germs and smoke is called fresh air और clean air. जिस एयर में डस्ट या जर्म या फिर स्मोकिंग चीज नहीं होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग फ्रेश एयर. एयर हम लोग कहाँ से मिलता है? सोर्सेस ऑफ एयर. वी नो ट्री इज द मेन सोर्सेस ऑफ एयर बिकॉज they take in carbon dioxide and give out oxygen which is very useful for human beings. We should breathe in fresh air. It keeps us healthy. Next, uses of air. We know air has uses different ways like air helps us in breathing. Air helps us birds to fly. It helps us flying kites. It helps in drying wet clothes. Air carries to seed of a plant to new places. And it helps in separating grains from the chaff. It helps to hot air balloons rise and fly. Air is used to play instruments like flute, and air also helps to play instruments like flute and mouth organ. And it also sailboats move on the water. That means we use air in different ways. Without air, we cannot survive. Next, air pollution. What do you mean air pollution? Now, addition of harmful substances to the air is called air pollution. जब एयर में कोई हार्मफुल चीज जो खेती का होता है हमारे लिए जो अच्छा नहीं वही वाला चीज कब मिल जाता है एयर से तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं. एयर पॉल्यूटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मोक, जर्म एंड फ्यूमेंस, बैक्टीरिया, डस्ट एंड सम हार्मफुल गैसेस. दिस पॉल्यूटेड एयर कॉजेस harm to our health and environment. It causes also a number of lung diseases like asthma, eye infection and burning sensation, etc. Next, air pollution happen in two ways. One is natural causes and second one is man-made causes. Natural causes क्या है? Like forest fire या volcanoes या dust storms are natural causes. But man-made causes are many things rather than natural causes. Air mostly polluted due to man-made causes like burning of coal, wood, dried leaves, waste causes air pollution. This is called man-made air pollution. Cutting of trees and forests by man for making more houses and factories increases air pollution. That means air gets pollution, more effect on man-made causes. Next, measures to prevent air pollution. How can we prevent air pollution? First, we plant more and more trees to get fresh air. Number 2, all vehicles should get smoke emission test done. That means a vehicle should be we use till 15 years rather than we do not use this vehicle. Use public transport instead of personal transport. That means अगर हम कहाँ पर जाना है तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या ट्रक ट्रैकर या फिर कोई
ऑटो इस गाइड में जाना चाहिए, ना कि हमारी प्राइवेट व्हीकल को यूज करना चाहिए। बिल्ड फैक्ट्रीज आउटसाइड द सिटी, हम लोग को हमेशा हम लोग सिटी के अंदर फैक्ट्री यूज ना करके सिटी के बाहर, उसी सिटी के बाहर मतलब फॉरेस्ट के पास में हम लोग को फैक्ट्री बिल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, bury waste like dry leaves and animal waste in a pit to make manure instead of burning it। कल हम लोग को जो ड्राई लीव्स या एनिमल वेस्ट है उसको बर्न करने से अच्छा है कि हम लोग को उसको एक ही जगह में रखना चाहिए। डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स, हम लोग को ब्रस्ट क्रैकर्स को यूज करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और क्या हम लोग अगर एनर्जी को यूज करने में कंजर्वेशन करते हैं तो वो भी हमारे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। सो रिमेंबर टू टर्न ऑफ लाइट्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस व्हेन नॉट इन यूज। जब हम लोग इस चीज़ कोई काम में नहीं आता है तो जैसे लाइट या कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस, हम लोग उसी टाइम इसको ऑफ करना चाहिए। ऑल्सो यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, बल्ब, एप्लीकेशंस लाइक हम लोग को जैसे हम लोग अब यूज करते हैं एलईडी या एलसीडी, लेकिन पहले हम लोग अलग बल्ब यूज करते थे जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता है, लेकिन अभी जो हम लोग एलईडी और एलसीडी जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लेता है, तो हम लोग ऐसे ही एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब से लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज हार्ड कॉपी इन व्हिच आई राइट ऑल द शॉर्ट नोट्स अबाउट दिस चैप्टर। यू शुड राइट इट इन योर science copy and practice it. Thanks and wait for my next class.